हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी बुक का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसका देखेंगे। तो व्हाट डिड द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? इसका आंसर हो जाएगा द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। अब हम आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What ideals did Nelson Mandela set for the future of South Africa in his speech? इसका आंसर हो जाएगा Nelson Mandela set out ideals to liberate all his people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. एंड इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। How, according to Nelson Mandela, had apartheid policy affected South Africa? इसका आंसर हो जाएगा According to Nelson Mandela, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in his country and his people. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What did Mandela think about the oppressor and the oppressed? इसका आंसर हो जाएगा Mandela thought that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. इसका जो पांचवा क्वेश्चन है वो देखेंगे। What according to Mandela is true freedom? True freedom means freedom not to be obstructed in leading a lawful life, according to Nelson Mandela. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। What are the twin obligation referred to by Nelson Mandela? तो according to Nelson Mandela, every man has two obligation in life. First obligation is for his family and second is for his country. And question number 7 देखेंगे। What was unique in inauguration ceremony? The leaders of different countries attended inauguration ceremony and General of Defense Force, यहाँ पे force होगा, and police which earlier came to arrested Nelson Mandela now saluted him proudly, which made the event unique. एंड इसका 8वां क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। साधारण शब्दों में जो उद्घाटन समारोह था उसका वर्णन करना है। तो इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टेकिंग इन साउथ अफ्रीका। द सेरेमनी वॉज अटेंडेड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स फ्रॉम मोर देन 140 countries around the world and thousands of the people of South Africa of all the races to make the day memorable. Question number 9 इसका देखेंगे। What did the generals and police officers do on that day? The generals and the police officers saluted Nelson Mandela and pledged their loyalty. And question number last 10th देखेंगे। What is the greatest wealth? यहाँ पे wealth होना चाहिए, WEALTH, wealth of a nation in Mandela's opinion. मंडेला के शब्दों में जो राष्ट्र का wealth है, धन, सबसे बड़ा धन क्या है? In Mandela's opinion, the greatest wealth of a nation is its people. मंडेला के शब्दों में जो सबसे बड़ा धन है राष्ट्र का वो है राष्ट्र के लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।